Oh damn! I don't know if in camera the fog is visible. Oh, very chilly man, very chilly. चलो खतरों के खिलाड़ी करते हैं कुछ. एक बार गाड़ी ऊपर करके बताओ. All right. So next day, next morning, we are going towards चित्तौड़गढ़ फोर्ट. अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल. ये है हमारा घर जहाँ पर हम लोग रहे. क्या पेंटिंग से यार इधर हर जगह है. और ये रही हमारी बाइक से हमारे बाकी के दोस्त. So I had come in the morning and my bike was completely wet because of the dew drops. So I was cleaning it early morning. उसी बहाने थोड़ा सा cold start भी कर लिया था. And now let's see. हाँ see, almost हो चुकी तो है. So this little champ wants to take a picture on my motorcycle. Sorry, it was not mine. Looks like. Sorry, it was not mine. Looks like. Welcome. Come from this side. Come, I'll help you. Sorry, you got hurt? No problem. Chalo, now we'll make a move. So, majority of the places in Udaipur are like this. भाई हाईवे कहाँ से मिलेगा? हाईवे कैसे मिलेगा मुझे? हाईवे हाँ चित्तौड़गढ़ जाना है. चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड से सीधा मिलेगा आपको हाईवे. सीधा जाओ. हाँ ये सीधा. ये इधर आगे गली जा रही है, सीधा रोड पकड़ लो. ये वाली गली या आगे वाली गली? आगे जाके गली एक चलेगा. विचारूया पुढे परत. इकडे विचार. अंकल हाईवे कहाँ से मिलेगा मेरे को? हाईवे कहाँ से मिलेगा? चित्तौड़गढ़ जाना है. तो कैसे जाएंगे? थँक यू. मला कळलं नाही पण कोणता लेफ्ट? भरपूर लेफ्ट आहे तिकडे. One thing is for sure, you cannot use Google Maps if you are riding inside the city because the roads are so confusing and they all look so similar. Even Google Maps was showing us very different kind of ways. So we decided we will not ask Google, we'll ask the locals. Locals versus Google. Let me ask him. भाई चित्तौड़गढ़ जाना है मुझे. हाँ. कौन सा? Okay, thank you. Can you see that handsome? अंकल चित्तौड़गढ़ जाना है मुझे. कैसे जाएंगे? चित्तौड़गढ़ जाना है. चित्तौड़गढ़ एकदम सीधा सीधा. बिल्कुल स्ट्रेट. आगे हाईवे मिलेगा क्या? हाईवे से बिल्कुल सीधा जाना आपको. ओके. 20 किलोमीटर में मतलब जाएगा चित्तौड़ी. 2 रोड जाता है, एक डबोक पे, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है. अब आगे जाके 20 किलोमीटर जाके पूछ लेना. ओके, तो अभी फिलहाल मैं 20 किलोमीटर सीधा जाऊँ. 12 किलोमीटर है यार. थैंक यू. माय गॉड, इट इज़ वेरी चिली. Well, the best thing about Rajasthan is the roads. I mean, the roads are pure bliss. They're beautiful. Roads surrounded by mountains and the condition of the roads, next level. Amazing. However, the people riding on the roads, they are a bit dangerous. As I've seen many big lorries as well. They change the lane without prior signals, and the 4-wheelers are like crazy. You can see I'm still riding on that road. We are heading toward चित्तौड़गढ़ फोर्ट. अरे कहना क्या चाहते हो? Oh damn, bro! You saw that? What the heck? This is what I was talking about.
Crazy shit, man. Crazy shit. Nope. Should not speed up that much. Yep. That's because I'm not speeding up because I am not wearing all my gears. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. That's because that's a fort, and once we reach the fort, we'll have to walk a lot, and I won't be able to walk in my riding shoe that much. Also, riding pants, it'll be a little difficult, uncomfortable for riding, walking on a fort. Like we have to climb and stuff. So that's the reason I did not wear it, and we decided to ride carefully. Yeah, man. Triple street is like so common here. Okay, alright, so now we could see fog. I mean, see, nothing is clearly visible. See this? I don't know if in camera the fog is visible, but there is a lot of fog in front of us. I mean, all of a sudden this fog came out, and we are riding through it. I'm not sure because mostly camera mein fog zyada dikhta nahi hai, but there is. I mean, the visibility is not that much. Oh damn, it's become more dense now. नाक बहना स्टार्ट हो गई है. Oh shoot. Oh, very chilly, man, very chilly. ग्लव्स सब में ठंडा लग रहा है. इतनी सर्द हो रही है, इतनी सर्द हो रही है कि मतलब जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं. एकदम बराबर टाइम में my battery died. Alright, so we have almost reached. So here is the fort. Looks beautiful. So I know he must be getting annoyed. We have to wait again and again for all these things. Okay, so first entrance. And I've heard about this fort that many people are still living inside the fort. We saw some houses back there. Now we are going ahead, of course. So, but the fort is quite huge. It's around 13 kilometers ka fort. Amazing, isn't it? And it's one of the hugest. क्या बोला तूने? I mean, it's one of the largest fort ever. Look at that, man. Oh, so this is the second gate. Beautiful. Beautifully made. I mean, the construction people used to make at those times is next level amazing. I mean, it's still there. The kind of stones they used to use, the kind of precision they had. Beautiful, right? See? कहाँ ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री वो सब के हिसाब से वो लोग बनाते थे, तुम सोच सकते हो. I mean, like, this is the third gate. Good we brought a bike, otherwise ये सब. Fourth gate. They all are known as pole. This is Jorla pole. That was Hanuman pole. This is the fifth one, Lakshman pole. Why, yaar? Come on. I was not expecting traffic. So this is also one of the things to keep a note of, that it gets crowded like this. Thank you. Sixth gate. काय बोलतोय तो? हाँ, किती रुपये तिकीट? 400. किती रुपयाची तिकीट आहे? 40. त्या माईला मी फोर्ट बनवेन 400 रुपये मध्ये. मस्त जोक मारा रे. या हस रे हलकट हस. टिकट लेके जा सकते हैं ना आगे. So you can get the tickets of the fort right over there. There is a counter for the entry ticket, which was 40 rupees, and the bike parking. And the fort is 13 kilometers
huge, so you can take your bike to the entire fort looks like, and whenever you park it, you just have to have that parking ticket with you. You cannot park your bike anywhere and go for a longer period of time looks like, but you can take your bike along and roam and come back. But make sure that when you park your bike, if anyone asks, you should have that parking sticker. तो आज के लिए गाइड का ज्ञान यहीं तक, आगे का हम लोग आगे देखेंगे अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे. So there is this temple. So as per your guide Chiru, what we are going to do is we'll be going to the extreme top and वहाँ से देखते देखते नीचे आना चाहिए, बिकॉज बाकी लोग वही कर रहे हैं. अरे माँ कसम कहाँ बैठा है बे. आई होप वहाँ पर थोड़ी गर्दी कम मिले. अरे बाप रे, ये सब बहुत सारी जगह है यार. आई थिंक इसको पूरा करते करते रात निकल जाएगी. तो यहाँ पर तो नहीं है गर्दी, बट आई एम प्रीटी श्योर मेरे जैसे ही बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया होगा और सबसे ऊपर गए रहेंगे और वहाँ पर ऑलरेडी गर्दी होगा. ये भी कहीं जा रहा है बे रोड, ये कहाँ जा रहा है. अच्छा ऊपर वो बंदर बैठे यार, भगा भी नहीं सकते ये लोग, बीच में घुस गए तो. There is a lake over here and there are doggies also over here. Maharana Pratap. Beautiful, no? Small temples. Oh, there is a lake. चलो खतरों के खिलाड़ी करते हैं कुछ. वहाँ क्या कुछ नहीं मिला ना तो बम्बू लग जाएंगे. सुपर्ब चढ़ान. वाह, है ना यार अच्छा स्पॉट. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो. आप राइडर हो क्या गाड़ी. राइडर, हाँ हाँ. अच्छा एक बार गाड़ी ऊपर करके बताओ ना. ऊपर मतलब अच्छा वो नहीं, वो सब यहाँ नहीं करते. तो क्या करते. वो एक अच्छी जगह होती है वहाँ करना होता है. यहाँ पर रिस्की है, क्या कर सकते हो तो. यहाँ पर डेंजरस है, यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए. कुछ नहीं करते हैं, वहाँ पर ही करते हैं. हाँ उसने बड़ी हिम्मत रखी रहते ना. हेलो हाय. रेस में होंगे भैया. क्या रेस में होंगे, क्या राइड में होंगे, राइडर में. हाँ कहाँ से सर. मैं मुंबई. मुंबई से आए हो. ये भैया भी. हाँ वो भी मेरे साथ ही आया. He's asking me to do wheelies and all. क्या बताए. मैं क्या बताऊं. हमारा दुख ये सब नहीं करते हम. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. आता ही नहीं है तो करेंगे क्या. थैंक यू. डैम, ये पब्लिक रिएक्शंस कैसे कर लेते यार. मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है. हाँ माय फ्रेंड कार्ड मीना काढा ते काढा तुम्ही. माय फ्रेंड इज एम्बैरेस्ड. So this is the other spot which we are going.
My favorite animal is here. So cute he looks, or she looks. My god, beautiful. So innocent and cute that creature is. Yeah, I really love it. Arre. You're not cute, you're stupid. But I really love elephants. I don't know, I have some different connection with them. The most innocent and most cute creature ever. Welcome to Udaipur. You see this? Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. They will not consider only whatever you want to do. They would still do what they want to. हम गलत आ गए ना? ये ऐसे ही. वो व्हीली हो गया इधर तो. Triple seaters trend, like see 1, 2, 3. We have decided to end our day, so I shall meet you guys in the next episode. हम लोग टिडिंग. Shit, हमारा पार्किंग गया.